guys, I'm Kajal Paliwal and you are watching Code That Hacks. In today's video, we are going to discuss about the tools and frameworks of machine learning. This video is basically for those who are looking forward towards machine learning and for all the beginners who want to enhance their skills in machine learning. So if you like our content, hit the like button, subscribe for more videos and press the bell icon for new video notifications. So let's get started. Now, as you all know that artificial intelligence and machine learning has grown itself a lot in past few years, and machine learning is itself very large that it covers a lot of libraries, a lot of tools and a lot of frameworks, and we cannot discuss them in one shot, and that's why we are here to discuss some important tools and frameworks. So now before jumping on to that, let us first quickly revise what is machine learning. Now, what is machine learning? Machine learning basically allows all the software applications to learn from the input data what is wrong and what is right to give more accurate and more desirable answers. Correct? Now, in simple language, we can say कि हम एक मशीन को इतना सारा डेटा इनपुट कर रहे हैं, उसमें कुछ डेटा सही कुछ डेटा गलत, कि वो मशीन एग्जामिन कर पा रही है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास कभी कोई ईमेल आता है तो अगर वो ईमेल स्पैम होता है ना तो स्पैम में चला जाता है, एंड रियल होता है तो आपको शो होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ट्रेन है इतने सारे एग्जांपल्स के साथ कि वो पता लगा लेता है कि क्या चीज रियल है क्या चीज स्पैम है. तो यही होता है मशीन लर्निंग, बस इतना. ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक व्हिच इज टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स. सो टूल नंबर 5, TensorFlow. Now what is TensorFlow? TensorFlow basically एक machine learning open source library है which is written in Python, C++ and CUDA. Like TensorFlow के दो फायदे यूज करने के कि लोग इसे क्यों यूज करते हैं. पहला, सबसे पहले तो of course we know that ये एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लाइब्रेरी है जिसमें कि डाटा फ्लो यूज होता है. बट इसका बेनिफिट ये है कि इसमें डाटा इतना क्लियरली फ्लो होता है कि वी कैन सी कि किस तरीके से डाटा न्यूरल नेटवर्क्स में फ्लो हो रहा है. एंड नाउ अ सेकंड पॉइंट इज कि ये पावर एक्सपेरिमेंटेशन है. Now, अगर मैं पावर एक्सपेरिमेंटेशन को डिफाइन करूँ तो दैट इज कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक, आपके पास सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. आप उस एक को इतने सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रन करवा रहे हो सेम टाइम पे एंड वो एक्यूरेट आउटपुट दे रहे हैं. दैट इज पावर एक्सपेरिमेंटेशन. तो ये दो फायदे हो गए TensorFlow के. Now TensorFlow itself has two versions, that is 1.2.0 which is CPU based and 2.0.0 which is GPU based. Now GPU based काफी हेवी सॉफ्टवेयर हो जाता है इसलिए हम यूज करते हैं 1.2.0 एंड इनका इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो नाउ नंबर 4, PyTorch. नाउ व्हाट इज PyTorch? ये भी बेसिकली एक मशीन लर्निंग की ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, बट इससे ना TensorFlow को डिजाइन किया था गूगल से एंड PyTorch को डिजाइन किया है फेसबुक के AI रिसर्च लैब में, दैट इज FAIR. PyTorch के क्या फायदे हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत इजी है, डीबगिंग बहुत आसानी से हो जाती है एंड इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये प्रोटोटाइपिंग और डिप्लॉयमेंट के बीच के टाइम को स्पीड अप कर देती है. ओके, नाउ नंबर 3, Keras. Now what is Keras? Keras is a high level neural networking API. It is written in Python and it can work on both CPU as well as GPU. Now if you know, generally लोग Keras ही prefer करते हैं Tensor और PyTorch के ऊपर. Why? क्योंकि because of इसकी fast experimentation, debugging हो, deployment हो, कुछ भी हो, ये बहुत ही fast work करता है चीजों में. And that's why हम Keras यूज करते हैं. Number 2, Scikit. Now what is Scikit? The Scikit is basically an open source machine learning library, but it supports supervised and unsupervised learning. Okay, now if you don't know what is supervised and unsupervised learning, click on the I button and watch it out because you should know what is supervised and unsupervised for Scikit. Okay, now what it does is it is used for model fitting, it is used for model evaluation, it is used for data processing and etc. It is built on NumPy, SciPy and Matplotlib. Now what are these? These are Python libraries which we are going to learn in upcoming videos. Okay, this is all about Scikit. Number 1, Knime. Now it stands for Contents Information Miner. It is also an OpenCV library which is used for data analytics, reporting and integration. It is a GUI based workflow. Now GUI stands for graphical user interface. And now Knime को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि even if you don't know how to code, you can use it. You just have to take data from somewhere, model it out
एंड डिप्लॉय इट। आजकल बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोडिंग वगैरह अगर नहीं आती है तो, एंड दैट्स व्हाई इसे यूज करना बहुत इजी होता है, डीबगिंग के लिए बहुत आसान होता है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज ट्रेनिंग। सो विद दैट ओके, नाउ सो आज हमने सीखा कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टूल्स एंड वर्क फ्रेम जो कि मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ इनके इंस्टॉलेशन और इनके इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए सी यू गाइस, थैंक यू।